Cry, 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 keep crying, cry, cry, cry. Concatenate non-zero digits and multiply by some description. Okay. Um, okay. Okay. Where is my YouTube chat? YouTube chat is not working. Hello guys. Evening. So concatenate non-zero digits and multiply some one. Okay. Form an integer x by concatenating all the non-zero digits. So what he's trying to say. I need to concatenate every form and integer x by concatenating all the non-zero digits of n in their original order, and if there are no non-zero digits, then x is equal to 0. Let the sum be the sum of digits in x. So you mean by whatever x I'm going to convert for it should be the sum of that thing, and after that I need to return the x. Cool, brah. Shouldn't be that hard, right? First I will take the let x, which is going to be, maybe I will take this thing. In the end I will return it as a number. What I'm going to do is that I'm going to run and for loop. I'm going to go till end of my n, and n is an, okay, I see. Like I can do like this. Right, now I can't, I mean, let n string, maybe I need to take string, right? Do string, I go still my nstr outline. Yo, I'm typing four characters and I'm removing 4 characters. What the fuck? What's wrong with mine? And let current will be like nstr of I, and if current equals 0, then I would continue, or I'm going to just x plus equals to my current, which is going to give me the current value whatever is going to come. Then after that I'm going to get the values of x, and after that I'm going to take the sum. Once we get the x, then I'm going to run another for loop and do same thing. If plus and return is going to be my number of x multiplied by sum is going to be my output, and now I'm going to do sum plus equals to my number of x. It shouldn't be like this, right? What the fuck?
number of x of I, number of x of j. Since this is a string, I need to take the index. I think this should work. And this is a question, I guess. Concatenating all the non-zero digits and in the original. If there are no non-digit, then it is going to be 0. So what should I do? Maybe I need to put an some different kind of case here. If there are no non-zero digits, then x is going to be 0. But here it is going to be empty, whatever this thing. So instead of doing that, I need to check if it is greater than. If this is true, then I'm going to return this. Or I'm going to return this. I don't know if this will work or not. Let me try. Let me try. It's taking a lot of time. So we are getting a 0 here at the end. Like how the 0 came. Yo, what the fuck is this? How did the 0 got missed, bro? I mean, like the 0 shouldn't be coming here. If we add all together, then would we get a 0 here? Okay, instead of getting the screen bigger, I need to make my this screen bigger, and maybe I need to zoom up a little bit. So I'm able to see the whole thing right now. 1020303004. So we are supposed to get 1234. And if I add all together, then how the hell the 0 is coming? And here I'm getting the proper answer, I guess. If it is 0, then I'm going to continue. But if I try to not continue, then it should be adding everything together, right? Let me see what I'm getting here. Both the solutions should be going wrong right now. We are getting 0 0 0 0 0. Yeah, as expected. But if I ignore the 0, then how will I get a 0 at the end? Are we getting any carry or something like 3 plus? If I add all together, we are getting 10, right? If we multiply that with 10, then we should be getting 0. Oh my god, what the fuck happened? Like, why my sum is not good? Sum is 10. If we multiplying that with this thing, maybe because of this shit. Let me remove this shit. If I do this, then I think we are supposed to get something. Since we don't have 0 condition. But I think this is going to break now, since or if we don't have any non-zero digit, then we are not handling this case. If my n is equal to 0, then I'm going to return.
if n equals to 0, then I'm going to return n, otherwise I'm going to return this. Now I think we have handled that case also. Yo Bhavesh, what's up man? How is it going for you? I think we have handled it. Yeah, I'm learning Rust. Cool bro, we got only 3%. Hell, is that so bad? I mean, I think we can improve, but some part we can improve this since we haven't formalized. I do DS in JavaScript, bro. At least 10%, 25, fine enough. This guy is doing okay. He is doing the digit wise. Like, yeah, you can either do this or you can convert it to a string, I guess. But I think doing like this is more advantage. Gives us more advantages. This is my solution. First time I'm seeing my solution directly. No, this is not my solution. This is someone else. But they did the same. But he did not even handle the zero wala case, bro. Why? So यहाँ पे he handled. Oh, he did it in a single for loop, bro. Wow. If n equals to 0, then he's continuing. Otherwise, he's doing all the things in it. Why did I even use a second? I'm not in college. I'm in college, but I'm doing PG right now. Bro, he's doing a lot of work, so I think he deserves to be here. Let me just see the solutions of other people who have solved it. Someone might be getting 100%. This person. Maybe they have some formula for doing the sum and other stuff. Maybe that's the reason they're getting सम वाला तो इसने वही से ही किया है जैसे हम लोग ने किया था एंड ये तो हम लोग मतलब हम लोग ये वाला मेथड नहीं किया बट वी डिड समथिंग डिफरेंट एमसीए don't do MCA just pick some क्या बोलते हैं course वगैरह you can pick from the different local organizations those who teach you something regarding the courses. I think that's better than the courses you pick for the college. Since getting the degree like MCA and BTech, which doesn't help. But if you are having a different skill, not the degree, but you are having a different skill which is like employable, then I think you will definitely land somewhere good. Instead of getting a degree which is fucking useless. Since degree is like now just like a chocolate you buy in a store. Yeah, I think you can choose something else maybe like job is not the only one solution I guess. You can either build something on your own and you can make that as a product and you can get money out of it, or you can start some sort of business and do something. Like job is like secondary I guess. I'm just planning to do job for few years. After I save money, then I'm just going to quit it. Then after that I'm going to be a full-time streamer as well as doing some sort of business or something bullshit. I don't have any other idea. Like I don't want to be a corporate slave until I die. I mean that's not my goal. I just want to become financially independent, man. Like I should be able to buy whatever I want at that time. For that thing, I need to do job for few years. Once I save a lot of money, then I will quit. Yeah, like Leetcode is bullshit. But I tried to build a product and it really didn't work.
You have to keep trying. You don't have to, like, you shouldn't give up like that. You can see me, like, I have been trying for like 93 days. I mean, like, I'm still not getting any calls, but I didn't give up. Something, something like that. Do we have any different solution? Either you can write different functions, like, in order to make it look fancy and bullshit, or you can just write like this now. Like, this is for creating the x, and this is for doing the sum. Anyhow, the time complexity is going to be like O of n, I guess, most probably. And I think not more than that, since we are only running one loop, which is differently running on its own. First is going to run this thing and this thing. If it is inside this, then I think it is going to be like O of n square. But since it is outside, then I think we have O of n, which is pretty solid time complexity for this solution, I guess. Oh, even I do. Like, I took 2 years to know what I need to do in my life. Since I was trying to look for some other different stuffs, everything was fascinating me. So yeah, like, I was fucking confused, like, what I need to do in my life. I was trying different thing, different days. Like, I literally tried everything, bro. Like, literally, you see, I tried music. I tried music in a sense, like, it's some sort of DJ music and stuff. We have a software called as DJ8 or something. I don't know. I even tried that thing. Like, I did not even leave any professions. This one virtual DJ wala. I even tried this, and I even tried doing drawing and stuff. Let me show you. Try something too, but I think it's not better enough right now. I even try to do drawing on my own. This is like completely from my imagination. Like, I was not good at drawing, but I just tried, like, to see if it suits me. Then I tried this. Yeah, I tried some other drawing like this. But literally, I drew everything using my what do you call the thing? Like, touchpad on the laptop we have, right? The fixed mouse. Like, what do you call that thing? Touchpad. And even this one, literally, I drew everything with my fingers. I, I don't even have any idea like what I need to do. Then I just kept exploring, and even started exploring hacking stuffs, and I've explored a lot of fields, bro. Even I started video editing, and even I started doing YouTube gaming contents. Like, I had 700 subscribers on my old channel, but I don't know, like, YouTube banned me for some sort of reasons. But then after that, I started doing streams on this one. Like, started with the code thing. Yeah, it's a pretty old software, like, it's so old, bro. Literally, only people from the old time only knows that software. Like, most people from today's time doesn't know about the DJ virtual DJ software. Like, nobody would know that thing. Like, it's pretty old. And we even had Zender, Xshare, and we also have terabyte copy or something. I don't know, like, what the name. Tera copy or something, which is like fastest version of file explorer you can use. Not file explorer, maybe for copying the files and moving the files, I guess. I used to move 20 GBs of file using that software. Like, it was so fast in the Pentium processor, which is like when I was studying in this 8th standard. But I don't know what the fuck was wrong with me. I used to play San Andreas whole day. If I had my mindset open at that time, then I would have been like some sort of fucking maniac in the coding world. Like, if I started coding at that time, like, but still, like, I don't know. I was just playing games. Instead of playing games, if I started like with some sort of programming language, something at that age, then I would have been like a prodi or something. What do you call that thing? It's all my mistake, man. It's all about the surrounding. People exploited me to play more games, and they provided me a lot of games to play at that time. Like, I used to play a lot of games on the Pentium processor. Then I used to wonder, like, why my system got fucked up. Like, literally,
most of the time the motherboard got burnt, and I think sometime RAM got damaged. A lot of stuff happened. Then I slowly came to know about OS and stuff. Then I explored a lot of things in the hardware and stuff, and then yeah, I learned a lot of things. But then finally, when I was studying in the college in the third year, uh, there came an webinar sort of thing for the web development, and they taught me, yeah, they taught me like about the JavaScript. They light up a bulb using the JavaScript. Then I was like, what the fuck is this? This is something crazy. I never tried this. I should explore more. Then I started doing that thing and posted for 7 months on the LinkedIn. And after that, I got hired in some sort of that was my first company, but they didn't pay me much. But yeah, still, it was fine enough for me for learning and getting started somewhere. Like instead of not getting anything, getting something is better, right? So yeah, that's how my journey got started, and then like now I'm fucking back to the same position where I was 7 months ago. I guess not 7 months, like maybe 1.7 months, I guess. Yeah, man. Like I don't know. Like if I had my senses open at that time, then I could have been like some sort of fucking genius in programming world. I guess not might be the genius, but I still like I could have been earning a lot of money in Fang or Man something. Then until then I could have explored a DSA. Maybe जैसे तुम मतलब दूसरे दूसरे क्लासेस में आओगे तो देन यू वुड हैव एक्सप्लोर्ड राइट तो मतलब तुमको पता ही होगा उस टाइम पे then it would add a big advantage for me, right? I missed the big opportunity, man. Like my father provided me system when I was studying in the school, but I still misused that and just played games and watched some. I didn't have YouTube at that time. I used to use the what do you call the thing? Modem, internet modem. I don't know. I had something company named as Hawaii or something. Yeah, this one. I think at that time we had only 3G or 4G. I guess I don't know. We did not even have 4G. I guess at that time. This one I had. This one I still have this one. This is the one I used to use. I used to recharge with the scratch card, and I used to. I think that, that's the first time I used to surf on the internet. I was like, fucking wow, this is so amazing. Then after that, I came to know about the Wi-Fi and stuff. Like Wi-Fi were not pretty much popular at that time, I guess. When I was studying in school, this is the one my father bought me, and I used to download games from the Apunka games or something like that. Or should I shouldn't have told that thing right now. Like YouTube will ban me now. That's fine for me, maybe. I don't care. Anyhow, this channel is going to get banned after a few days, I guess. Few days, a few months. Whenever the YouTube finds me, I think they will ban my channel. But I don't care. I will rebuild myself again. But yeah, this time I care, man. Since I have been consistent for 100 days, first time in my life, I think this time I care. So you're given a price of where price of I is price of given stocks. Let's do some lead coding, and after that we can get started with the rest. Maybe I have explored a lot of rest. Not more, but yeah, I kind of explored. Where prices of I is the prices of given stock on the ith day. You want to maximize your profit. Yo, bro, I was so happy with the gaming channel. I was like, wow, I need only 300 subscribers. Then after that, I can monetize my channel, and then I can just start streaming full time. But bro, but my life had some other fate. I guess I don't know. Now I'm here, like I'm doing live stream on coding. I never thought I would do this thing on my life. I swear, bro. I don't know. Like I never thought of it. I would be doing this thing. Since I was fucking dumb, I never thought I would be doing this thing. I'm still dumb, but yeah, kind of little improved dumb. So let's see. I think this is okay, let me read the question again. You're given an array of prices. The prices of ice, prices of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy stock and choosing a different day in the future to sell the stock.
Return the maximum profit you can achieve from the this transaction. You can't achieve any profit return. Can't achieve any profit return. So how is this happening? Do I need to pick the minimum stock price where I can buy for the minimum price and sell it for the highest price after my current minimum price, maybe like minimum price index? Then we don't have to check before index, I guess. No, we are planning to discuss, but I don't know like when we are going to discuss. We have 29 days left for that thing. I think we have a lot of time, but I think it will take only one day to discuss what we are going to build, and then after that we will just start. Just get started with it. So this is like we have to pick the minimum value first, which is going to be my buying price, and selling price should be the maximum value possible in the array, but it shouldn't be before my minimum price index, I guess. So should I keep two variables for that thing, or can I do it some other way? How would I approach this problem if I was fucking dumb? What I will do is like I will check for the minimum value, which is going to be my one here, and what I'm going to do is like after that I'm going to check if my minimum value is indexed. After that, if we have some maximum value, which is like um, subtracting my maximum profit from the buying price, which is going to be if I is the highest number, I guess. Yo, Prono, what's up? Yeah, I had a gaming channel. Let me show you. Oh, I don't have the Gmail logged in right now since I removed that thing, bro. I got fucked up. Like I literally got more angry on the YouTube channel and this I got. I don't know if I posted it on the Twitch, maybe not Twitch, Twitter or something X. I think I had a different account for that thing. I hope nothing pops wrong right now. Can't you just log in, bro? What the fuck, bro? Yeah, let's. Oh, nah, bro. You can put fucking ads. I don't care. Since I'm not using it more. Did I post something? How do I see that? Profile. I think I have posted about that thing. Oh no, I have marketed about myself in Twitch uh, to get some replies regarding the jobs, but I don't think it didn't help me anything. I literally posted everything. I kept spamming. I don't have that thing, bro. I think it's different account. 7 more subs? I don't know. Do we need seven more subs to get? I don't think nobody will subscribe to me. That's fine. So let's solve this question for now. Fuck subscriber, I don't care. Okay, how do I get this thing? Okay, I got it. And where is my chat, bro? I need to make the chat smaller. Wow, 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 wow. Only fan. Wow, crazy. Watching them in private is better. Like, I mean, like it's a good choice, but on stream it can lead to bad consequences, I guess. In field, I even started forgetting spelling because of auto type. I'm glad that we don't have the auto type in the desktop, I guess. We can get them by using some extension, but I think it's not available in raw.
Yeah, I don't think it leads to the termination, but if you are deleting that part before you end your video or live stream, then I think you are safe enough. And yeah, you can even delete the whole stream itself if you want. There are some sort of ways to do that. I have seen a lot of people who are doing Omegle live stream, and you know, like what kind of things pop up when they're doing Omegle and monkey streams. Monkey is like some sort of Omegle chota clone kind of version. I'm so habitual to the array what do you call it thing? Array word, since prices is not my cup of tea right now. I mostly use ARR, so I'm just habited to that thing. Habitual or habitat. Habitat is like somewhere we live, right? I'm even going to pick the index of my. I don't know, like maybe I can take like this. Whenever my price of I is less than my buy price, then I'm going to put my buy price as price of I, prices of I, and my buy price index will be there. What was the okay, buy price index supposed to be my I, and I'm going to break out of this thing. This is going to be my buy price. Now we are supposed to find the selling price. For selling price, I'm going to write down another for loop, which is going to be my A and post prices dot length again, 0 plus plus, and now we are supposed to pick something which is going to be bigger than my buy price. If my um, if my prices of I is greater than my buy price, it shouldn't be buy price. It should be greater than buy price. Then what I'm going to do is like I'm going to buy price. Not buy price. Should I? Nah, I think I need to store the maximum selling price, I guess. And then my J is greater than what? My buy price index. J should be greater than my buy price index, and my profit is going to be what? I'm going to return the profit. So instead of storing that thing, I'm going to return my profit. Like, what is the profit? Selling price minus my buy price, I guess. Oh my god, please help me. It's saying something like price of a is not defined. Do I need to wrap this thing inside my map dot what do you call the thing? Map dot absolute. Yo Giri, what's up Giri bhai? क्या हालचाल? And like how are you man? Oh, I did not even store it in the selling price. It should be prices of I. Should I break out of the loop or like what should I do? I don't think we need to break out of the loop. We are checking if prices of I. Should I put this thing in the front or should I put this thing in the front? Will it check in the order or like
Will it check only for the AND condition here? It should be, both should be true, something like that. So returning like this will work, right? Oh, I didn't change this thing. Even this thing here. I think it got stuck in infinite loop. Yeah, fine, man. I don't have money to subscribe you, but yeah, I will just wait. The loading animation is super cool. What does it say? So my buy price did not get updated. So you're saying my buy price didn't get updated? Oh wow, Congo man. No, I'm not getting any calls. So so basically, my buy price is not getting updated. But why? Shouldn't my buy price get updated because I'm using the this part here? Why is it like if prices of I is less than my this thing? Okay, I'm trying to store the minimum value, but I'm trying to store the minimum value, but I'm again putting the most minimum value possible in the buy price, which is going to be minimum value. Ah, I found the error. Now I think it should work. I think it's working. It should be 5, right? We found the error, man. This was the error. Whenever you're trying to store the minimum value, then you have to use the most positive value, which is most positive value, and for selling price, it should be the most negative value. So it will be the maximum value from there. There we go. We got the answer, I guess. If everything goes right, then I think it should be working. Okay, no, so it should be. If okay, I need to check. How do I check if it's profit or not? Maybe I will store a value, man. Like, instead of creating everything on the top, I can just create it here. So it will look good. People would understand like if someone trying to look my solution. And my profit is going to be this thing. Initially my profit will be 0. If profit greater than 0, then it is going to be my profit. This is like ternary operator, and I think this should work. If it is greater than 0, then it will give me the profit, otherwise it is going to give. We have handled that. No, so you're saying my profit was not. I didn't store the profit so far. 80% people saying fuck off, bro. Why, bro? Just subscribe, man. Okay, I'm still facing the same issue. Why are we getting one less profit? Yeah, what is the issue, man? Did you do something wrong? Here we are supposed to get the.
Oh, how do I handle this thing? Um, Prices of uh, yeah, we need only 5 subscribers to reach, I guess. No, we need only 7 subscribers to reach 500. You guys can do, man. Come on, man. Do subscribe, man. Yo, can someone tell me what is the issue here? Since we are trying to store the least value. If my least value is at the end, then I'm going to store profit as 0. How do I get the last index? Shouldn't this give me the last index? Can I use I? Um, I don't len minus 1. Can I do that? I think this should work. It says something prices. How do I use this test case, bro? Can use it like this. Oh, we are getting 2 now. Fuck. Damn. Hey, profit is 0, then how should I do like this? Oh, nah, it should be 0. Profit can't be 1. Did I miss something here? Should have put this thing inside? Profit will be back to maximum map dot absolute of this thing. And prices of J is greater than my selling price. Shouldn't my buy price should be greater than my selling price? Oh hell no. What is the issue? Selling price should be greater than my buy price. I think that's for the profit thing. Profit should be greater than my buying price. I guess.
let me rewrite. Profit greater than buy price, तो प्रॉफिट आएगा अदरवाइज। Yeah, it works. No, greater than equals to. No way. Oh my god, I got 3 wrong answers. Bullshit. Buy price is infinity and let buy price index is 0 and selling price. Prices of 5 is those and I'm going to check for the buy price. Setting the buy price and buy price index and profit is going to be 0. And if prices of J is greater than my selling price and J is greater than my buy price index, selling price will be prices of 5. Profit is going to be my mark dot absolute of selling price minus buy price. And if profit is greater than my buy price, then not to show the profit of the section will be 0. Which is absolutely right? What is wrong here? Oh God, please give me strength to overcome this kind of bullshit mindset. But what is wrong here? What? Life mode, yeah, kinda. Question, I think this is buy and sell stock, I guess. पता नहीं वही होगा। हाँ वही है, I think। ये भी नहीं हो रहा मेरे से। What the fuck? यहाँ पे लिखने का अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ ना। सेलिंग प्राइस से बाई प्राइस ज़्यादा रहा दिन में एंड यहाँ पे आई थिंक नेटली रिटर्न प्रॉफिट से और थोड़ा रिफैक्टर करना होगा तो स्टार्ट आप ये इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बाई प्राइस इंडेक्स यहाँ से स्टार्ट होगा और जे विल गो टिल अभी गुड टू गो ना, ये नहीं चाहिए। जब भी प्राइसेस ऑफ जे ज़्यादा रहा सेलिंग प्राइस से देन स्टोर माई सेलिंग प्राइस इन जे एंड ये तो मिनिमम प्राइस वाला निकालना। कम ऑन मैन, दिस शुड वर्क दिस टाइम। ये तो काम कर रहा है मेरे को इसका देखो।
सिंस रिटर्निंग वाला में इशू हो रहा था, मैं ऐसा कर दिया तो नाउ if profit is greater than then only it is going to store or it is going to return. Yep, working I guess. I think I wrote a big still not working. What the fuck bro? वो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे ये भाई ये डाल के रखा था, किधर गया ये मिस हो रहा है, इसकी वजह से मेरा लास्ट इंडेक्स भी कवर कर लिया और कुछ कवर करना है। लास्ट इंडेक्स भी कवर हो गया। प्राइसेस ऑफ आई शुड बी लेस देन माय बाई प्राइस एंड आई शुड बी लेस देन माय प्राइस। लास्ट का छोटा होना चाहिए उससे, और उसके अंदर में होना चाहिए सेम रेंज। एंड फिर देन वी आर गोइंग टू गेट द बाई प्राइस एंड वी आर स्टोरिंग द बाई प्राइस इंडेक्स एंड वी हैव प्रॉफिट हियर एंड जे इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बाई प्राइस इंडेक्स प्लस 1 जे प्राइसेस देन दैट आएगा। फिर प्राइसेस is greater than selling price, then only I am going to store the selling price inside this. If selling price is greater than my buy price, then only I am going to store the profit and return the profit. अब इससे ज़्यादा पता नहीं। आई थिंक काम करना चाहिए ब्रो, इतने सारे यार ना ब्रो यार। अब तो क्या ही मतलब भाई, इतने 1 2 3 4 1 2 5 times 5 क्या ही होगा मेरा। मैंने से इशू कहाँ पर हुआ इसमें ब्रो, रुक जा भाई। इन एंड रो आना चाहिए, इन एरो थोड़ी। ग्लोबल मतलब क्या बोलते हैं, कुछ और करनी है। What the fuck are you saying, bro? Huh? अबे वो सब तो हैंडल कर लिया, यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, देन स्टिल आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग राइट। यहाँ पे तो हैंडल कर लिया मैंने, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर भी आई एम हैंडलिंग दिस कंडीशन हियर। उसके बाद तो वो डाल रहा हूँ जो भी है। ना हेल्प में फिक्स हुआ, कहाँ से बार एरर आ गया। यार मैंने भी तो यही किया, पागल है ये। So what the fuck is wrong with my solution then? Even you are doing the same thing. You took the minimum price and you're going to go till the end and you're going to store the same thing. If prices of I is less than my buy price, so it's doing the same thing and you're having else if you
yes. You did. Oh, you did everything in a single loop. See. So you're saying I don't even need the J index here? Why my brain was trying to do this thing? Yeah, directly do that. What did he do? Prices of I minus minimum price. Okay, same thing you're doing, right? This part. मतलब तो यहीं पे कंपेयर कर ले मैक्सिमम प्रॉफिट अलग वेरिएबल बनाया मैंने प्रॉफिट से बनाया रहा मैं यार इसको फिक्स नहीं कर सकते हैं क्या भाई वो काम तो कर सकता है लाइक बाई इंडेक्स क्यों नहीं चाहिए काम एल शिफ्ट में डालने से एंड अलग अलग डालने से उसका भी हो रहा है प्राइसेस ऑफ आई माइनस बाई प्राइस किया तो ग्रेटर देन प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में डाल दिया मतलब इतना करने से हो जाएगा हाँ ब्रो आई एम फकिंग राइटिंग ब्लोटेड सॉल्यूशंस ना इतना ही करना था क्या मतलब इसका जरूरत ही नहीं ख्याल ना अच्छा मेरा सोल्यूशन काम क्यों नहीं कर रहा मेरे को ये देखना है ब्रो आई डोंट नो डीपी मैन आई एम लर्निंग पता नहीं है डीपी आई नीड टू एक्सप्लोर मोर आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डीपी राइट कैन यू टीच मी डीपी oh nah I was trying to find everything individually so it failed hell nah I'm so dumb if I had both things in one place then I think it should be working same as this thing I wrote a different loop for selling price and buying price but it should be in either one like it should be in A for S how did I make this mistake did I include this test case hey bro can I get job without preparing aptitude for freshers or I'm a good you need to know aptitude I guess aptitude is like a first round in the freshers round I guess यार इतने bloated कोड क्यों लिख रहा है चूतिया साला you guys can hate me for writing bloated code you can pass any comments I am okay with that go ahead scold whatever you want to scold or now it's like I need to take the return an array of answers such that it's equals to the product of all elements in of nums except the nums of I मतलब मैं समझा नहीं क्या है ये अच्छा मैं मेरा करंट वाला आएगा देन आई नीड टू इग्नोर द करंट वाला एंड देन
I need to do the rest or what? Oh yes, I don't know. How do I ignore the current one? If I do if I then continue, then it will continue for everything. Should I should I skip only the क्या बोलते हैं उसको alternate वाला मतलब I+2 कर दूँ? Will it skip? If I do I+2, then will it skip on? I just want to know. It's saying like you must write an algorithm that runs in O of n time and without using any division operator, division operation. So let us make a product array, product name, so which we are going to use it. Hold your seats. Now I'm going to write bloated code again. Sorry for that. So what I need to do, bro? I am currently grinding Leetcode. Wow, you're grinding Leetcode. That is pretty much better, bro. Keep grinding until you get something good. We know we need 7 more subscribers to reach 500. Let's go, guys. Can you do that? I don't even know aptitude. Like I'm fucking dumb in aptitude. I'm the dumbest in the. Like, we need to learn a lot of patterns for aptitude, I guess. So इसका करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं करंट वाला स्किप करने मेरे को. So what I'm going to do is I can I plus equals to 2. Yeah, will this work? I don't know. अरे प्रोडक्ट एक्सेस ही नहीं कर पाएगा. What the fuck? No, it should be product, right? Product then मतलब अलग अलग इंडेक्स होंगे. I think it should be like this. And I think 0 multiplied by ऐसा करने से I think we can't get the answer. Right? Let me first print the answer. No. Should I do 1? Three? What the fuck? How 3? I is 0. It's going to skip 2 index. It's 3. But it should skip the current index. Like, what the fuck am I? अगर मैं current index skip करना था मैं सारे index skip कर रहा हूँ. Double index. No matter what I'm skipping double index. Oh, product of any prefix. अच्छा prefix निकालनी. O of n square में करेंगे इसको. Let us do in O of n square first and then we can come to the normal solution. Here we can what is called
क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमाइज। जीरो था भाई वो। अभी क्या करनी है कि मतलब चेक करनी है, करंट इंडेक्स निकालनी है ना। करंट इंडेक्स क्या होगा, जब आई एन जे मैच कर जाएगा तब करंट इंडेक्स होगा। तो एट दैट टाइम वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी प्रोडक्ट। एंड जब मेरा क्या होता है वो नम्स नहीं करेंगे, नॉट इक्वली का कुछ दे रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई करेंगे नम्स, तो सारे आ जाएंगे इसके अंदर में। उसके बाद में पुश इनसाइड में यहाँ पे कुछ कर सकते बाहर। फिर आंसर को रिटर्न कर दो। इसको ऑप्टिमाइज करने आई तो ऑफेंस पे हो। आउटपुट में 1 1 क्यों आ रहा है, व्हाट द फक इज दिस। ओह माय बैड। ओह यार ये क्या यार, द फक, नो वे, व्हाट द फक। ओह, प्रोडक्ट विल चेंज फॉर एवरीथिंग, ग्लोबल प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी प्रोडक्ट चेंज होगा, प्रोडक्ट चेंज होगा। This will work fine, but I want to write an optimized solution with this. Oh, fence पर चलेगा क्या? Yeah, I got a TLD, I got a TLD. Lol. कैसे इसको लिखें अभी? आंसर तो हम लोग ने ऊपर बना रखा है। प्रीफिक्स कैसे बना सकते हैं? प्रीफिक्स पहले हम्म, पहले का प्रोडक्ट डालना पड़ता है ना उसके अंदर में। तो लेट मी रीड। प्रीफिक्स कैसे बनता था? यार सफिक्स प्रीफिक्स तो पता है, सफिक्स उल्टा से बनाऊं। 15 मिनट से यार, बता फक भाई, इतना मेरे से क्या होता है। प्रीफिक्स बनाने के लिए, प्रीफिक्स बनाने के लिए प्रीफिक्स चाहिए अपने को। प्रीफिक्स तो हम इसको प्री प्रोडक्ट लिख दूँ। एंड प्री प्रोडक्ट कैसे बनेगा? प्री प्रोडक्ट में हम लोग पहले आई को आइट्रेट करेंगे। आई को आइट्रेट करने के बाद में देन वी विल स्टार्ट प्रीफिक्स के लिए। आई थिंक वी डोंट नीड इट इन सेक्शन, प्रीफिक्स इज गोइंग टू बी टोटल। प्रीफिक्स यहाँ पे रहेगा, देन वी हैव टू बिल्ड अवर प्रीफिक्स। तो आंसर ऑफ आई के अंदर में प्रीफिक्स पहले स्टोर करें। तो पहले वाला मिल जाएगा, पहले वाला मिलने के बाद में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रीफिक्स। आई थिंक वी डोंट नीड दिस थिंग, लाइक लेट मी सिंपल। प्रीफिक्स में ये डाल देंगे, फिर वी हैव टू क्रिएट द प्रोडक्ट फॉर द प्रीफिक्स। प्री प्रो के अंदर मल्टीप्लाइड बाई नम्स ऑफ आई करेंगे तो प्रीफिक्स बन जाएगा। सफिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे? सफिक्स विल बी सेम राइट, मतलब लेट सफ प्रोडक्ट करेंगे, इसका भी वन ही रहेगा।
and instead of starting from 0 we are going to start from n. रिवर्स लूप मान आई नहीं है, अब ये चाहिए, क्या करेंगे, nums डॉट लेन माइनस 1 करेंगे एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पीछे से आ जाएगा आंसर ऑफ आई के अंदर में, सर ये होगा फर्स्ट वाला फॉर्म कर लेंगे, सब प्रो फॉर्म होने के बाद में सब प्रो के अंदर में मल्टीप्लाई बाय नम्स ऑफ 2। अब इसको उसके अंदर में ऐड करेंगे, इसको उसके अंदर में ऐड कर रखा है आंसर में पहले ही अपने पास ये है, आंसर में ये है, ओ यार यहाँ आंसर में ये है भाई, तो मतलब सफिक्स को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, अगर सफिक्स को मतलब प्री प्रो में सारे ये रहेंगे जो भी हैं इधर के, एंड सफिक्स में पीछे से आएंगे सारे, तो मतलब जो भी पीछे वाले हैं सारे मल्टीप्लाई होते जाएंगे, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, एंड सफिक्स प्रो भी बनते जाएगा इसे। अब ये काम नहीं किया तो आइडिया नहीं आ रहा है। प्रीफिक्स सामने से होता है, अब सफिक्स पीछे से होता है, एंड पहले हम लोग को प्रीफिक्स बनाने के लिए वी नीड टू स्टोर द इनिशियल वैल्यू फर्स्ट, उसके बाद ही प्रीफिक्स बनेगा। अगर मैं ये नहीं करूँगा देन आई वॉन्ट द आंसर, एंड सेम गोस फॉर दिस थिंग, सिंस वी ऑलरेडी स्टोर द प्रीफिक्स वी नीड टू स्टोर द, क्या बोलते हैं स्टोर, सफिक्स स्टोर करनी है, बट बिफोर स्टोरिंग द सफिक्स वी नीड टू multiply it with the prefix we have already in the answer array, तो काम नहीं करेगा। I think this is working, so it's working, I don't think it will work, मेरा सोल्यूशन 4 बार ही हो रहा, एक बार तो टीएल ले गया। लेट मी लुक सम ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, या तो ऑप्टिमाइज है ही नहीं, वो ये मीडियम था, मैंने पहले कर रखा, हाँ दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस, अब जावास्क्रिप्ट किधर गया, there's no JavaScript, well fuck you bro, where is JavaScript, I need JavaScript bro, nobody did in JavaScript, मेरे को इसको इसमें देखने के बाद ही मेरे को सुकून मिलता है जावास्क्रिप्ट का। ये क्या कर रहा था यार, अच्छा ये आइडिया दिया है, हाँ हम लोग भी यही किया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट बिफोर आई, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एलिमेंट आफ्टर आई, बिल्ड प्रीफिक्स, ओ आई कैन इवन डू लाइक दिस, मतलब मेरे को करना नहीं था वन चांद, इसने कैसे फुल सॉल्यूशन, वेयर इज फुल सॉल्यूशन, अप्रोच ऑप्टिमाइज 0 space, wow, you don't even need extra arrays, wow, while traversing backward then multiply, store the prefix in result array and then multiply suffix, यही तो मैंने, अच्छा हाँ we use O of n, O of 1 space we use O of n right, n number of times, O of 1 कैसे होगा, इसने आंसर नहीं लिखा है, दिस अप्रोच लिखा है, और है आंसर है, नहीं we need to store this block, this is the one optimized one, मतलब ब्रूट फोर्स वो था जिसमें मतलब डबल लूप लगेंगे, आई सी सफिक्स प्रीफिक्स का ही, आई डोंट थिंक वी हैव एनी अदर सॉल्यूशन, अच्छा ये क्या गया, राइट प्रोडक्ट लेफ्ट प्रोडक्ट, अरे अरे भाई 3 अरे बना दिया दूसरी के,
तीन अरे बना दिया तूने, वाह भाई, अलग ही नशे हैं बंदे। फिर ये रैन थ्रू एवरीथिंग एंड रिजल्ट के अंदर पे, हाँ ये भी अच्छा मेथड है ये, चीजें फिट कर ली। Yeah man, take care man, take care. Thanks for joining Pranav. अच्छा दिस इज ब्रूट फोर्स, ओके। ये तो हम लोग ने किया, थोड़ा टीएल ही लाल पता है टीएल क्या है, बट स्टिल ट्राइंग इसको। आज सब लोग ने मतलब तीन तीन अरे यूज कर रहे थे क्या, तो क्रेजी है। तीन अरे कौन यूज करता है भाई। थोड़ा सा रस्ट कर ले अभी, वैसे भी लेट होने वाला है। स्टार्टिंग रस्ट, थोड़ा सा रस्ट करके देना स्लीप। टल टल ये मेरी सपोर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। मजे कर ब्रो, मजे ही करो। डू रस्ट ना, 4 घंटे। थैंक यू। I know I'm fucking bad, but I took it. 4% एक दिन 40% होगा, लिख के रख लियो। How much coins do I have right now? I need to buy like what do you call that thing? Merchandise. I had 1,000 coins on what the fuck, I can't even wait. अरे मिलता कहाँ पे है भाई, दिखा दो यार। हाँ दिखा दो सब, फोन नंबर दिखा दो, सब दिखा दो। प्रोग्रेस क्या है? 2023? Nah, did I start Leetcode in 2020? I never did. मतलब कॉलेज में एक तो किया होगा, पता नहीं। करना चाहता, रोज करना चाहता। इवन एंडेड क्रेजी। फिर क्यों बकचोदी कर रहा है। 666% of success acceptance rate for the whole solutions I guess। इसी में क्या है ये, 7 का आज का। It's already taken, so I'm just 0-1. Nice question by the way. Someone finally asking something good. Do you know Rush? ये क्या है? Oh, okay. Whenever the jar gets filled up, then I think I have completed the whole topic, I guess. So out of 253 2 pointers, I have completed only 42. Which one is the highest one? Then? I think only 2 pointers is the highest one. But even the sorting, I have 30. I don't know, like when did I solve this thing? Hash table 52. Damn, this is highest. I think 120 arrays. This is the highest one. I don't think we have more than this. Array is like pretty bigger number. Strings 50. Dynamic program 10. How the fuck I did dynamic program? I don't even know dynamic. Did I brute force? Or did I, by mistake, I did dynamic programming without knowing a dynamic program? Maybe I don't know the topic, but I think, yeah. Sometimes in flow, I think it will come. Yeah, how do I, there it is.
Can I get something for 1000 coins? Something. No, no. Tomorrow I have GD for the company named as. पता नहीं क्या तो नाम था. अच्छा नाम ही भूल गया. ऐसे भी याद कौन रखेगा. कंपनी उतना बड़ा थोड़ी है. भाई कहाँ से मतलब कैसे ढूंढूं यार, मिल ही नहीं रहा है. हाँ केप माइंड करके कुछ तो है. हायरिंग केप माइंड कुछ तो है करके. कल मेरा GD है 4:30 PM को. देखते हैं क्या होता है. थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग फॉर्म. अच्छा मैंने फॉर्म भरा था, पता नहीं कुछ तो क्या है. बट मेरा कल है मीटिंग में जाऊंगा, देखूंगा क्या होगा. लेट्स होप समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट. वैसे तो मेरे में तो कुछ है ही नहीं. अप्लाई 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 अप्लाई. कुछ भी नहीं है. चूतिया हूँ यार. इतने कॉइन्स आए यार, कुछ भी नहीं मिलेगा सर तो. ओ 6000 कॉइन्स में लिंक्डइन प्री मतलब क्या बोलते हैं इसको, लीड कोड प्रीमियम. बट आई डोंट नीड दिस. मैं इसको लेके क्या ही करूँगा. आई एम फकिंग डन. चलो थोड़ा सा रश कर लेते हैं, देन वी कैन गो टू स्लीप. अभी इट इज रश टाइम. आई एम लर्निंग रश since it is the hardest language and I want to try something beyond my JavaScript fucking things. तो मतलब थोड़ा रश कर रहा हूँ. Nothing else. चलिए फिर रश शुरू करते हैं. I'm going to read the chats from my mobile phone and right now I'm going to use the browser as my reference point for the rush. Rest will be seen on the screen. You can see the VS Code here. मैंने कहाँ तक कर रखा है. मैंने enums and enum struct and tuples किया है. hash map I guess. hash map collection से. and what else did I do. थिंग मैच किया, बस इतना ही है. आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं. बट विल सी समथिंग इम्पोर्टेंट पॉप्स अप. फंक्शंस तो पता है ना, फंक्शंस कैसे लिखते हैं. FN फंक्शन का नाम होता है ना, खड़ा. एम्परसेंड STR होता है नेम. एंड प्रिंट LN फॉर नेम. प्रिंट इज फॉर प्रिंट न्यू लाइन. एंड एक डिस्प्ले फंक्शन नेम ही है. फंक्शंस आ रहे हैं. ओनरशिप तो पता है, लाइक देयर कैन बी ओनली वन ओनर एट अ टाइम. अगर ओनर ही चेंज करना है तो म्यूटेबल बनाना पड़ता है. borrowing is like reference ऐड करना like this instead of copying the whole thing you are going to reference this thing if you want to use this. भाई hiccups क्यों आ रहे हैं भोसड़ी के, दिमाग खराब कर रहा है मेरा. अच्छा मैंने स्ट्रिंग फ्रॉम वाला मैंने किया है. अबे यार इतना हिचकी क्यों आ रहा है, दिमाग खराब कर रहा है. ओ ये डी रेफरेंस, सॉरी गाइस, डी रेफरेंस ऑपरेटर. इसको यूज कैसे करते हैं.
size of value types str can't be known in the compilation time. Right size is not implemented for str. Right size is not implemented for the str. How do we use dereferencing? ये तो borrowing होता है. How to use the dereferencing? Oh, damn. मतलब pointer. Yo, finally Giri has entered my Discord. यार कोई भी ऑनलाइन नहीं है. What the fuck?
Hmm. Okay, nobody's online here. I don't know, like why nobody's replying. Okay. Oh, odd. What? Lol. Sorry guys. अरे अच्छी का माँ की यहाँ क्या कर रहा है? दिमाग खराब कर दे रहा था. Okay, ignore them. They're going to learn all. इन लोग ना आएंगे तो ना आएंगे, मैं अपना चैनल में रखूँगा ब्रो. बस के लिए नहीं है क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक बंद कर देता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए मेरे को. गाना भी सुनने का थोड़ा. इसको कनेक्ट कैसे करा था? ऑन प्ले समथिंग. Nothing to what? You want to play it? Kind of playlist one. $134 million views. What the fuck? ये crazy है भाई. क्या प्ले करवा रहा है सब इतना? अच्छा इन लोग ना यार, मैं ये जनरेटर बना सकता हूँ सब आराम से. Should I try this thing? तो एक बार सुनता हूँ कैसे. I think 2 hours is enough, I guess. I won't be able to stream more. ये करते हैं, ट्राई करता हूँ. Hey, this. Can you really play the YouTube songs? ये लोफी सॉन्ग्स बनाना इजी होगा ना? हार्ड है क्या? यार वॉल्यूम चेंज करने के लिए मेरे को चाहिए था ये सारी. If 70 is too much for my ears, 50 is also too much. नाइस यार, अच्छा साउंड है. कितना अच्छा टूल लिखा है इन लोग ने, मस्त दिखने में.
यार तेजस भाई, तुमको सुनना है तो मतलब आ जाओ यार यहाँ पे वीसी में आ जाओ, तुमको सुनना है तो मतलब if anyone wants to hear this song then you can come and join this study session here. Let me share the invite link. If you guys want to study together then you can join here. I can't play on the live stream right now. आवाज आ रहा है क्या? तेजस भाई आवाज आ रहा है क्या मतलब? वाह भाई, अभी रात कितने रात को स्ट्रीम कर रहा भाई तुम? तेजी, मेरे को लगा दोपहर में करता हूँ। दूसरे देश क्या बंदा? अबे इसमें आ रहा है क्या? नो नो, मतलब म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक आ रहा है, म्यूजिक 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 आ रहा है क्या? तेरे को साउंड आ रहा है क्या म्यूजिक का? देख भाई, बंदे लोग 56% लोग बोल रहे हैं आई वांट फक ऑफ। क्या क्या लोग हैं यार। ओह फिर तो सही है यार, फिर तो सही है। देन आई एम फाइन।
you try solving 662? Not right now. I'm learning Rust right now. Come back by Argentina. This is football, right? Sorry, man. I don't watch sports. Yeah, hiccups, bro. What the fuck? Oh, what is this? Can I even do this? What's the purpose of doing this here? Oh, damn. Good guy. अरे फ्रॉम मतलब क्या यूज होता है यार? फ्रॉम का क्या है? Use to allocate an growable mutable heap allocated string. Okay. मतलब ऐसे डायरेक्ट करूँ? तो सिंटैक्स क्या है इसका? It's normally it's going to be ampersand str. It's going to be string from hello. Okay, we don't even need to put the str here. Oh, it takes as a string. Okay. If I need to print this, I need to do this. We're just going to print the name, I guess. I can't do that. Okay, I need to wrap up this. अच्छा ये ग्रोवेबल स्ट्रिंग है, मतलब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ? चेंज तो ना हो, म्यूटेबल बनाना पड़ेगा चेंज. Mix match type string found str. How do I increase my global string now? अच्छा ऐसा पुश करने पड़ते हैं ऐसी. पुश str string is going to be like, and if I do again car to run, काम कर रही हो. It should be print element. Someone joined. Okay, keep grinding, nice. Passing the ownership to the function.
अरे ये वेक्टर वो वेक्टर में मत अंतर क्या है? एम्प्टी म्यूटेबल वेक्टर। मेरे को तो ये वेक्टर पता है, बस ये वेक्टर पता है मेरे को। म्यूटेबल फ्रूट्स बना रहा है। वेक्टर नॉर्मल वेक्टर एंड स्ट्रिंग फ्रॉम निकाल, इतना मेहनत करना। बनाना बनाना। चल दोनों हो गया, काम हो गया। ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। मस्ट बी स्ट्रिंग लिटरल। मेरे को सारे चाहिए थे। ये क्यों नहीं हो रहा? अपडेट तो हुई है। सो और टाइप मिसमैच str एंड ऐसा करना पड़ेगा आपका। delete root dot pop करेंगे, then it should remove the last। okay, root dot remove one। what is retain? Okay, let us create a task array। a task is going to be task and it's going to be vector and it is going to be my string first element sweep is going to be I've added it and inside my task I'm going to push what push new thing which is going to be my code for two strings since now we are going to print the first task छोटा के कम हो रहा task of 0 is going to be the first task। Now we got our first task, we are going to remove the task remove which one we are going to remove, we are going to remove the one task
and we have reviewed the one task. अच्छा ये तो मैंने किया था, हुआ नहीं यार, क्या है मैंने भी तो वही अभी ब्लू कलर है ऊपर, पहले ब्लू नहीं हो रहा था, व्हाट द फक। अच्छा मैंने ये कर दिया, लॉल। Struct is used to create a structure of data, मतलब ग्रुप ऑफ डेटा को बंडल करने के लिए यूज करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्ट डेटा का कुछ, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये मतलब उसका टाइप है। व्हाट इज आइटर? हेलो Region, what's up? Iteration borrows items immutably read-only, and you can look at data but you can't change it or destroy it. Pretty good enough. Iter mute is borrows mutably and allows you to change the values inside the arrays by looping. Returns returns some 20. Positions look for an item, returns it index instead of item itself. Oh, you guys are watching football match? GG, have fun. Item में position look for an item and returns index. Is it like index of in JavaScript? We have position in Rust, I guess. Find is just for find the first match. It's same as one thing, I guess. For find is just for struct, not for the vector, only for array, I guess. Still throwing the array. The method found in the array. Then array में कहाँ से दिखा रहा, पागल है क्या ये? अच्छा मेरे को ये करना पड़ेगा, पहले आइटर करना पड़ेगा। System. Hmm. And how do I get the um, string value then? Oh, okay. Borrowing use नहीं किया मैंने। और contains. We don't need to use iter.
Okay. But it does have the we don't have we don't have the heat in the fruit, I guess. This part, so it's perfectly working. X क्या है भाई? X क्या है? डबल हैंड क्यों आ रहा है? Damn, reference of reference. References of reference. Crazy. कुछ तो crazy है भाई ये तो. Okay, two people joined here. Deref pattern. ये क्या है? Wow. Let me write this syntax. Let found item is going to be my array dot filter. Each item find what? Find what is this? Like what the fuck is? And this is going to be my and my x is going equal to this x equal to my so mistake हो गया मेरे से. I need to cover the pipe. Did it go right? What is wrong here? You want an borrowing here, or you want an pointer on here? Nah, he's trying to replicate my fucking Next.js project in this thing. Hell nah, bro, don't do that thing. I think we can do, but I think that should be hard. Testing random bridge state.
I'm going to make my terminal even bigger. I like big screen. I have small laptop, but I still like big screen. First, is saying to define the possible statuses for the topic. Enum status is going to have my statuses. This is going to be my so what are the status first? Not start, not started. I don't have any habit of. What are the status, man? Master. And now we have topic structure. Structure, how is different structure. And it is going to have a string name. I think it should be capital. Status is going to point towards my status. It's separately enum. Now we are going to create a topic, I guess. Function main. I'm not going to write the function main. Now we have a dashboard. Oh, what the hell is this? Is this an object? Damn. First, we have to create a vector, mutable vector of dashboards, and it is going to have vectors. And inside my vector, it is going to have topic. And topic requires what? Name. Name is going to be my Rust to string and progress. So status is going to status intro. I don't know why it's throwing some error. I think I need to put this thing. Yeah, it works fine now. Topic, and I'm going to add some status. In order to access the status, we need to status double to say that inside my status I'm going to check for not start, right? And then put this in. Welcome to shade. Okay, current topics loaded. Maybe I can instead of same and for the same dashboard. I think dashboard should be working right now. Like, what the fuck is wrong here? Like, it says that topic does not implement the debug, and how the hell I'm supposed to do that? Like, I'm just returning the length here. I see. Instead of doing this, I can.
implement a tracker logic where we practice iterators as topic. Okay, let me check. Going to return boolean. Why does it say something wrong here? Like what the fuck? Oh, I didn't return it, so it's expecting me to return boolean. Now we have to check inside my topic dot iter inside find. Inside my find, I need to add the syntax. What the hell is the syntax? It should be like this, and I'm going to find the x, and x equal equals my first maybe not us target name. Do I need to put this through? How can I directly do this? Something is wrong. I don't need to put numbers on. Oh, it's throwing me error right now. What the fuck? Okay. Should I return like this? Now it's still complaining. Now it's not complaining. Fine. Update status. Yeah, I can do status thing. Update status. This is going to take my topic. Not like this. Inside my topic, I'm going to take target name again. This is going to be a string. Status is press and status. Why it's showing there? Why it shouldn't be ampersand? My bad. Since we are mutating it, I need to put it like this. After that, we are doing if I don't remember the topics dot iter. Damn, what is this? Iter mu? I don't know. Finding what? Finding my current target. I was just going to take this thing and p dot name equals to my target. If that is true, then I'm going to check. It's not demanding for this thing.
Oh, okay. It's in loop, I guess something, some sort of some. And now we are going to update my status. I am not able to see the status. Some is throwing some error. Some is supposed to be capital. Some. This is variable, I guess. Damn, this syntax is crazy, bro. As you are going to print like not be updated. Topic of font and the display function and target name. Yeah, in order to delete then like function delete task topics again mutable and it's going to be topic again and target name is going to be absence str and I think we don't need size function is going to delete first it's going to find if it is there then it's going to topics dot iter dot find and I'm going to take my target ampersand target should have ampersand up p equals to my name showing some error right. Okay, t dot name equals to target name. If it is there, then I'm going to topics dot delete. How do I do that? I don't remember the function name. What the fuck? Remove iter dot remove. What have remove? Delete. What was the thing? There's something new. I didn't get the function here. Like does this exist in only? I don't know. Does that exist only inside other thing? Ah, you have filter. Filter needs something called as target. Target. And I'm going to put a target of name not very close to my target. Will this work? Oh, it's throwing me error right now. Oh. Okay. Should be like this. It's not JavaScript. Whenever my target is not equal, then those things will be getting here. I need to keep the get filtered equals to here, and I'm going to return the filtered. I can't return filtered since I am not doing this thing. How do I return topic? Array of topic. Let's say I am iter and closer. Can I do like this? String
maybe Amberson STR. How do you return? Clone's a topic in the mass. I don't know what the fuck is this clone. Clone? Alright. But it doesn't come here. What the hell? Tname not equals to target. I did that. And we don't have a correct function. That's नीचे नीचे लिखना पड़ेगा. What the fuck? अजीब लग रहा है. How it look good? अब थोड़ा वाइब मैच कर रहा हूँ उसके इसके. अच्छा यहाँ रिटर्न टैग क्या दूँ यार? रिटर्न टैग बताओ यार. अच्छा वेक्टर ऑफ टॉपिक. Oh, correct doesn't exist. Okay, I'm going to remove this then. So don't work still. वेक्टर ही तो है ना. चलो वेक्टर में क्यों नहीं? कलेक्ट फंक्शन है ही नहीं बोल रहा है तो ये. बट मेरा टॉपिक्स कहाँ है? डैशबोर्ड तो वैसे वेक्टर ही है. देन व्हाई आई एम टेकिंग ये सब वगैरह. मतलब डन नॉर्मल कार itself. Vector target but still a clone coming. Still correct doesn't exist. Should I write it down? Semicolon. Vector topic can't be built in from iterator and items of right Amazon are running about. I don't even have vector topic inbuilt iterator. पता है क्या बोलते हैं. वो ये इधर नहीं चाहिए. But it's still complaining. Still complaining.
Top is not iter the target and target of name equals to not target of color outcome. There is path functionality with me. Let's see. Print all the status of my current task, right? Topics on the Amberson top and how to sign in. Print Amberson topics and this is the help display our display. I mean the topic dealer. Other I can only pass one. I want everything. Yeah, vector of topic by one type and it is or by yeah. The fuck is a recipe. Tell meta car read our status nothing. मेरे पे वो धंकस वो है नहीं status इसमें ना not started status of not started. Oh, it's complaining again. Topics does not have unit money. ऐसे काम हो रहा है इक्वल इक्वल कर देता हूँ एंड यहाँ पे कर देते हैं इन प्रोग्रेस जो भी है सब एरर क्यों दिखा रहे हैं सर रिटर्न करते हैं स्टिल से सकता रहा स्लाइस इसको यूज करना करेक्ट कौन करेगा चीज़ प्रिंट भी तो करना है ये एरर आ रहा है maybe I can take a status man still error दिखा रहा है feed और status ही तो है
पता नहीं, पूछते हैं। रिक्वेस्ट करूँ? व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोन? टॉपिक्स में आइटर फॉर ईच आइटम्स एंड फिल्टर स्टेटस वही तो कर रहा पड़े। इन स्टेटस में भी स्टेटस डाल रखा है, दिस इज प्रीटी फाइन एनफ आई गेस। इसका हमें जो भी करना है फिल्टर क्लोन में चाहिए। इक्वल इक्वल से स्टेटस कर रहा हूँ। व्हाट द फक? स्टेटस एंड क्लोन काम नहीं। इंटू आइटर क्या होता है? वो सड़ी के कितने अलग अलग फंक्शनलिटी है, मेरे को समझ नहीं आ रही। इसके लिए रो रहा था ये, क्लोन नहीं है। फिर भी स्टेटस ले हो रहा है, क्या इशू है? वेक्टर वेक्टर टॉपिक ही तो है, एंड स्टेटस भी स्टेटस है, वेक्टर टाइप रिटर्न कर रहा है। आई एम टेकिंग ए फिल्टर, फिल्टर नहीं चाहिए। क्या बोल रहा, मतलब स्पेस चाहिए इसको? पैन के लौड़ा वही तो है ये, दोनों स्टेटस स्टेटस ही तो है। अलग चलते प्राणी है क्या ये? नहीं आ रहा ब्रो, नहीं आ रहा। अच्छा रिटर्न नहीं चाहिए, मतलब अपने आप रिटर्न हो जाता है ये। बट लास्ट पर रिटर्न यूज टू कर आसपास, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर रिटर्न कर दिया। चूतिया आंसर है भाई। मतलब सिंपल मांग रहे क्या आ रहा है यहाँ पर? सिंपल नहीं आ रहा। ओ एम्प्रेस एंड सिंपल। इंटर अपना लफड़ा नहीं हुआ।
Na, na, na. Pranav is cooking hard, man. तो इसको बंद करवाता हूँ। सीखिए मिलेगा साला अच्छा लगेगा सोचा था अच्छा ही नहीं लगा। शांत हो जाओ। टाइप 1 प्रिंट और स्टेटस लिखकर जनरेटर क्या आता है इससे क्या बोलते हैं ऑपरेशन बरोबर वो बंदे हैं किधर यार जो मेरा हेल्प करते हुए साला वो कहाँ चले गए Hey brother, there is some status structure, there is some binary operation in it. What binary operation? यहाँ पे where do you have binary operation? Can you type in the chat, man? Enum? So maybe it should be enum. Ah, it's enum. Oh, I need to run what? Error? Run cargo check in terminal. Okay. The fuck is the command? Oh, it's only. It says HW previous warning. What the fuck? Remove this mute. Why do you want to remove the mute, man? What the fuck is wrong? Since I'm not mutating it, you're crying for that. Then how will I compare my status? What the fuck is this? It's saying like I can't use binary operation cannot be applied use types data. Then what the fuck? How will I compare them?
still throwing. पैटर्न मिलेगा मुझे कैसे करते हैं बात चीज़ पूरी वीडियो और मैसेज मैं बता। अच्छा तू गाना सुन रहा था। मेरे को लगा सुन नहीं रहा भाई। भाई इसका मैसेज कौन डिलीट कर दिया बता। अरे यार डार्क सोल भाई तुमने मैसेज डिलीट कर दिया भाई। यार बता दे कैट भाई कितना देर टाइप करेगा यार बता दे। इट शुड बोरो टॉपिक्स लाइक हम पूरा कोड दे दूंगा तेरे को। स्टेटस योर टाइप एंड इट कैन टेक पता नहीं क्या बोल रहा है। मैं पूरा ही दे रहा हूँ उसको। It should be, it should be rest. नहीं हो रहा यार कैसे कर दे। परसों ही तो बताया था इसने कैसे डालना है यार मेरे को भी नहीं रहा है। पार्शियल पार्शियल लिखी हो। ओ भाई कुछ तो क्रेजी बता रहा बंदा यार। यार 3 more सब्सक्राइबर टू रीच क्या बोलते हैं लाइक रीच 500 मैन कम ऑन मैन यू कैन डू इट। लेट्स गो टू मोर सब्सक्राइबर। अब ऐसा करना है रेस्ट करनी है। पुट पुट दिस पार्शियल कहाँ पढ़ा हुआ है? ये क्या है ये स्टेटस के ऊपर में डालना है ऑन टॉप ऑफ इनम। भाई ये क्या है भाई? विल इट इग्नोर समथिंग?
Damn. मतलब इशू क्या था मतलब can't I do without that thing? Oh, you can't use like this. सारे स्मॉल लेटर होने पे ये एरर जाएंगे वाह इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग कंपाइलर मैन डैम इसको भी मतलब भाई सा क्रेज है भाई ऐसे कौन मैसेज कर रहा है इतना मेरे को दिख ही नहीं रहा है किधर हो रहा है मैच को मैच कैसा लगाऊं उसके अंदर में मैच लगा सकता हूँ मतलब आर्ग्यूमेंट सप्लायर ओनली वन मैच है तो भाई मैच को मांग रहे हैं सीख लूंगा थोड़ा कांटे डू विद दिस थिंग पूछने में नेम्स भी इसमें मस्त है भाई वी कांट इवन यूज कैपिटल लेटर्स डैम ये तो सही है यार रस्ट का मस्त है मजा आ रहा है अभी बाद में सादा लगेगा यार को देन इट इज नॉट पॉसिबल नॉर्मली अच्छा मैप से करवाऊँ क्या इसको मैप से अरे एक बार बाहर में मतलब चेंज करने से अंदर में चेंज होने का मजा आ जाता है मेरे को अलग से जाके चेंज करना पड़ेगा उसको new state is getting changed and something else target name is same Unit task collect does not exist in the inbuilt task so क्या होगा closure SRC what the fuck is closure here then is it same closure as JavaScript
surrounding variables, something different from JavaScript, I guess. You can save the variable or pass the argument in methods like filter, map, and find. Damn. Collect डालने से तो आ ही नहीं रहा. Clone डालूं? Clone and collect. Clone पे collect है ही नहीं. Collect डालने पे error आ रहा, but still it is working. What the fuck is this? Saying it add something like somewhere like topics expected but found topic. Topic. Don't have that. ये बोल रहे हैं क्या? क्या what the fuck? ये तो खुद ही ले रहा, मैं थोड़ी ले रहा हूँ. You want me to add ampersand here? You want me to add here? आप बोल रहा returning type parameter topics referencing data owned by the current function. Cannot return the function. So इसमें डाल दो. क्या इशू है यार ये? A value of type vector cannot be a built-in iterator over elements of topic. मतलब तुम इसको रेफरेंस करने के लिए बोल रही हो क्या? तुमने तो रेफरेंस कर रखी है बेबी. Found topic, but I'm not even having this shit. और सारे तो नॉर्मल टॉपिक ही था. सिर्फ फुल्ली कंपाइलर. ये क्या कर लिया? किधर गया रे वो? आने का देखना है उसको पूछता. पहले एरर समझने पड़े यार, बहुत सारा अजीब अजीब एरर आ रहा है. रश तो भाई क्रेजी है भाई, बहुत क्रेजी है, बहुत मजा आ रहा है. इंटू आइटर करनी है. इंटू आइटर का मतलब क्या है? इंटू आइटर. वाओ. फाइनली जीरो एरर्स. मास्टर्ड मैंने कभी यूज किया है. क्रेजी. पीपल लाड वन. बेचारा मास्टर्ड अकेला रह जाएगा. बेसिक्स आ देता है. क्या म्यूजिक है भाई ये? ऐसा लग रहा है रोमांस चालू हो गया. म्यूटेबल क्यों हटाने के लिए बोला इसने मेरे को? म्यूटेबल नहीं रखूंगा तो क्या हो जाएगा? अगर म्यूटेबल रखा तो बोलेगा हटा दे भाई. बोलेगा हटाने के लिए बोलेगा. वेरिएबल डज नॉट नीड टू बी म्यूटेबल, रिमूव. कहीं तो बोला था, हाँ यहाँ पे बोला था रिमूव करने के लिए. ये देख. नहीं, कहीं तो रिमूव करने के लिए बोला था. अरे किधर गया वो? रिमूव करके कुछ तो दिखा रहा उसमें. Let's compile and see now. Cargo build. I think error तो कुछ आया नहीं. Cargo run.
Topic loaded 3. It's working fine. Yeah, let's go, guys. If I successfully able to write up 3 functions to use तो करूँगा नहीं इसको अभी ऐसे ऐसे बस just for fun and और कुछ बिल्ड करते हैं. अच्छा कमांड लाइन में मतलब इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से. std read line mute choice under flush tensors prompts prints immediately. Okay, so this is my choice. Let me try. to do struct बनाते हैं. लेकिन to do तो नहीं कुछ और बनाते हैं. ये तो to do जैसा ही है बट ओके. टेस्टिंग रैंडम बुलशिट. क्या थीम चेंज कर लें कुछ अच्छा. सोलराइज भी अच्छा लग रहा है. टुमारो दिस लुक गुड. डिफरेंशिएशन तो हो रहे हैं काफ़ी और स्ट्रक्ट बनानी है. टू डू के स्ट्रक्ट बनानी है. टू डू के स्ट्रक्ट में क्या होगा क्योंकि मेरा स्ट्रिंग स्टेटस होगा तो इनकम होगा वापस. बट इस बार वी आर गोइंग टू ऐड CLI. ये सब कैपिटल में होना चाहिए वरना एरर ना. कैंसल्ड का स्पेलिंग यही है ना. कैंसल्ड होता है कैंसल्ड होता है. ऐसा एरर भी नहीं आता कुछ तो. ये भी एक वर्ड है. काफ़ी है 3 काफ़ी है. दैट इज गोइंग माई स्टेटस. टू डू बन गया. और देखते हैं क्या करना है. टू डू बन गया. स्टेटस बन गया. तो टास्क मिस हो जाता. टास्क तो अरे ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए था. ये मतलब इसने नॉर्मल स्ट्रिंग क्यों दिया. इट्स टास्क. सिंगल टास्क. टू डू इज गोइंग टू बी माई अरे. इसमें काफ़ी सारे आइटम्स होंगे. ये देख अरे बनाया इसने. ऐसे थोड़ी बनानी है. नॉर्मल नहीं बना सकते क्या. should I put like this vector of what type. बन गया. हाँ बन गया. बन तो गया. तो इतना मेहनत ये क्यों कर रहा है इसे ऐसा. वेलकम टू द रस्ट CLI. ये प्रिंट कर लेते हैं. इसको यहाँ पर रखते हैं ताकि वी विल बी एबल टू सी इट क्लियरली. अच्छा इसके ऊपर जाकर चिपक गया. CLI बनाते हैं. लेट्स गो. CLI बनाने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिंट समथिंग ऑन स्क्रीन लाइक वेलकम टू रस्ट CLI. And it is going to have a loop which is going to run infinitely. एंड इसके अंदर में ऑप्शंस होंगे.
ये हो गया। फिर प्रिंट चॉइस प्रिंट करवाएंगे यूज़र का चॉइस प्रिंट करवाएंगे, डिस्प्ले फंक्शन एंड चॉइस। चॉइस तो हम लोग ने लिया ही नहीं, चॉइस कहाँ से आ जाएगा। तो इसको हटाता हूँ, ये नहीं चाहते। एंड देख देते हैं चूज वन। ये पता नहीं क्या है। आईओ के अंदर में एच डी आउट को जाकर निकालो, एच डी आउट के अंदर फर्स्ट फंक्शन उसको निकालो, फिर अनड्रॉप करो। The choice is going to be mutable since we are going to change it frequently, and string के अंदर में ये क्या है। std is going to check the choice in now io dot std क्या था ये, std इन निकालो। इन निकालने के बाद लाइन कर रहे हैं, लाइन करने के बाद क्या करें, चॉइस को पास कर देंगे। and choice is going to be my borrowing borrowing and we need to unwrap again. Choice is throwing some error right now. Why am I again I'm putting the mutable again? Like what the fuck is use of this thing? फिर से choice का मतलब वापस choice are trimmed to remove these extra spaces and white spaces. उसके बाद we are going to use mass, which is like क्या बोलते हैं उसको, if else condition we have in the other languages. ओके इसके अंदर ही सारा चीज लिख दिया इसने। फिर से अपने को निकालने पड़ेंगे, तो IO dot std std in dot read line again we are going to put mute of choice नहीं सर इस बार तो, इस बार we are going to hit the task है। तो पहले फ्लश करने पड़ेंगे, फ्लश std out dot flush अनड्रॉप करेंगे। अनड्रॉप करने के बाद लेट टास्क नेम वी आर क्रिएटिंग डॉट ए वैल्यूज स्ट्रिंग न्यू क्या निकाल रहे हैं, फिर आईओ के अंदर में अगेन std in एंड रीड लाइन करेगा। रीड लाइन करने के बाद में बफर मांगेगा, बफर मांगेगा तो एंड म्यूटेबल करेंगे, टास्क नेम कर देंगे, फिर अनड्रॉप करेंगे एंड यू आर गोइंग टू ट्रिम तो नहीं करनी है, ट्रिम कराना है। अब टू डू बनाएंगे, लेट टू डू बनेगा, टू बनेगा टू तो बनेगा टू टू डू का टू स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं टू डू का। आईडी का मतलब आईडी कहाँ पे बना, इसने आईडी कहाँ बनाई, अच्छा आईडी इसने बाहर में बनाई। प्रीवियस वाला आईडी के प्लस मेरे को आईडी करनी है, आईडी काउंट कर इसमें उसको दे डायरेक्ट। डाल देता हूँ उसमें क्या। अब बोल देगा वो सॉरी क्या। अच्छा ऑर्डर में आना चाहिए, ऑर्डर में आएगा तो टास्क नेम क्या है।
कहाँ से निकाल रहा है स्ट्रिंग फ्रॉम क्लास नेम ऑफ स्ट्रिंग। ओके कंप्लीटेड क्यों नहीं? कंप्लीटेड फॉल्स। मैंने तो ऐसे थोड़ी किया, मैंने तो स्टेटस डाल देता है। ठीक है स्टेटस निकालो यार भाई। By default it will be false and I think it should be false। सेमीकोलन चाहिए तेरे को, ले ले भाई, रो क्यों रहा है? सेकेंड चॉइस बनाएगा तो अगर टू डू के टू डू में कहाँ बना, क्या नाम बना था उसका? ग्लोबली एक्सेसिबल होता है क्या टू डू बनाने पे? टू डू लिस्ट इसने बाहर बनाया है इसलिए। अरे हाँ मैंने भी टू डू लिस्ट बाहर बनाया। टू डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो राइट। इस एम्प्टी भी एक फंक्शन होती है। प्रिंट करने के लिए होते हैं क्या, क्या है? और क्या हो गया? और आइटम इन, अरे फंक्शन क्या है यार, समझ नहीं आ रहा है यार। चलो राइटर एवरी आइटम लेट्स status equals to if item dot reader। ओ ये क्या है भाई? व्हाट द फक इज? कौन बेंच में इतना मैसेज कर रहा है, टड़ांग करके ना करा करेंगे। ट्रस्ट में तो मैसेज आ ही नहीं रहा है। किधर हो रहा है ये बच्चे भी? ले भाई इसको 1 बजे मैगी खानी है। अरे तो खा लो भाई तुम। अगर इफ कंप्लीटेड स्टेटस है आइटम में तो क्या करना है? अरे यार ये क्या है सिंटैक्स यार, भैंस कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अभी तक ये वाला देखा ही नहीं, अभी ये क्या है? प्रिंट करवा रहा है क्या? अच्छा ये प्रिंट है, बिना प्रिंट के भी कर सकते हैं ऐसे? है क्या ये? ओ डिस्प्ले पर्पस के लिए है भाई ये, व्हाट द फक। मैं कुछ और ही समझ रहा था क्या चीज़ है। डिस्प्ले करने के टाइम पे डिस्प्ले करवा रहा है। पता नहीं यार, कोई लड़की मैगी खा रही है डाल रही है, गा रहा था वो। आईडी डजंट आईडी वांट आईडी। एक रो मत तो हो, ठीक है दे दिया तेरे को आईडी।
उससे क्या हो गया? चले भाई। अबे 2 सब्सक्राइबर करो यार जल्दी यार, what the fuck भाई। 2 सब्सक्राइबर कर दो यार। ये क्या है मतलब, आइटम अगर कंप्लीटेड है तो फिर ये दिखेंगे, वरना फिर एम्प्टी दिखेगा, ऐसा बोल रहा है। सही था, ऐसा लिखता है, दिमाग खराब है। इतना समझ में आ गया, बाकी सब तो वही होंगे। पहले ये अनड्रैप मतलब निकाल रहा है, एसटीडी आउट से निकाल रहा है, फिर उसको यूज़ कर रहा है उसके अंदर में। एक पहले वेरिएबल बना रहा है, फिर उसको उसके अंदर में यूज़ करके उसके अंदर में वो वैल्यू निकाल रहा है, ले रहा है। वैल्यू लेने के बाद में उसको यूज़ कर रहा है मैथ्स के अंदर में। एंड अगर मैच कर गया तो फिर इज यूजिंग हिटिंग। चलो बहुत ज़्यादा सीख लिया भाई साहब। ओवरलोड हो रहा है, आइटर इंटू आइटर भाई साहब, क्या क्या है। borrows a collection immutably। Lol. Hearing pages out of the book to keep them। अगर खतरनाक खतरनाक एग्जांपल दे रहा है, ये क्या मतलब। नेम सिलिकॉन फॉरएवर मतलब उड़ जाएंगे नेम। पैन के नाम को फोन कर। म्यूट कैसे करते हैं भाई? तुलन तुलन करते रहेंगे, दिमाग खराब किधर गया वो? आइटर मतलब यूज करने के लिए है, फिर आइटर इंटू मतलब वैल्यू रिमूव कर देना मतलब क्या है? हो जाएगा नेम विल गॉन फॉरएवर लाइक व्हाट द फक। मतलब कौन यूज करेगा इसको? Cloned bridge sits middle of the iterator chain and it takes the iterator and outputs the reference. Oh shit, you're crazy. Why use it? Use it when you are read from the existing collections item. Requirement the structure enum must have derived clone। और द फक, ये सब हेडर फाइल्स है क्या? क्या है ये भाई, ये हमेशा आते रहते हैं। ये सब कौन याद रखेगा? चल सोता हूँ जाके, अब दिमाग खराब हो गया। नींद ना आवे मैनू, मैं तो सोने जा।
1 बज गया वो सड़ी के जाके थोड़ा सा देखता हूँ फिर सो जाऊंगा। थोड़ा गुड बाय गाइस। 1 सब अवे। हाँ कोई नहीं करेगा वो। 2 सब अवे हैं 2 सब। चल देख लेंगे जो होगा हम करेगा नहीं करेगा देखा जाएगा। सोता हूँ। कल तक देखूंगा हो जाएगा दिन पता नहीं। ये नोटिफिकेशन बार बार बंद क्यों है। मेरे को देखना में मजा आता है ऐसे ऐसा आता है तो। मैं कभी देखा नहीं मैं। मिलते हैं भाई। कल मिलते हैं प्रणव भाई।